Very good afternoon to one and all. I am Dr. Javeed Ul Aziz from IGNO Regional Center, Srinagar. आज हम डिस्कस करेंगे, we'll be talking about कुछ दो तीन इश्यूज है, दो तीन थीम्स है जिन पे हम बात करेंगे. One is Chalcolithic and early Iron Age. एक तो ये this is unit 7 of the block. Then we will also be talking about early Vedic age, and then if possible we may move on to the later Vedic period as well. So three themes we are taking: Chalcolithic cultures and early Iron Age, then early Vedic age and the later Vedic age. These are three very crucial themes in ancient Indian history. अभी तक की जो डिस्कशन जो to just to connect it to that what we have been discussing so far, जो आज तक हमने डिस्कस किया ये उसके साथ कनेक्ट कैसे होता है. तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया तो हम in our last two these sessions we discussed the Indus Valley civilization. We had a discussion on its antecedents, how it originated, how it diffused, इसका decline कैसे हुआ, इसके material characteristics क्या थे. All different, we discussed the different aspects of Harappan civilization so far. And in that discussion, if you remember, while having a discussion on Indus Valley civilization or Harappan civilization, to be more exact, Harappan civilization ही कहना बेहतर होगा. तो Harappan civilization का जब हम discussion कर रहे थे तो we came to the conclusion that Harappan civilization का जो आगाज था, this was in a way इस civilization की beginning जो थी, इस civilization का जो बारिश में आना था, it was in a way it was a culmination of a process जिसमें पहले ट्राइबल जो सोसाइटीज थी वो सेटल होती है, एग्रीकल्चर पास्टोरलिज्म से निकलकर वो एग्रीकल्चर में ज्यादा एग्रीकल्चर बिकम्स द डोमिनेंट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी. देन दे गेट सेटल, फिर स्मॉल लेवल पे विलेजेस बनते हैं. विलेजेस के बाद फिर हम देखते हैं कि स्मॉल टाउन्स बनते हैं. स्मॉल टाउन्स देन गॉट ट्रांसफॉर्मड इनटू सिटी सेंटर्स. और उस हिसाब से हम देखते हैं कि दैट हरप्पन सिविलाइजेशन एक evolutionary process के through भारत में आई. It did not came all of sudden. It did not came into being all of sudden. So there we have strong archaeological evidences to support that this was a culmination of a process. कि पहले villages settle हुए, villages फिर transform हुए urban centers में, and then from those urban centers ultimately came into being the Harappan civilization, जिसके कुछ prominent centers एक हरप्पा में था, मोहनजोदारो था, कालीबंगन, लोथाल, जिसके ये प्रोमिनेंट कुछ साइट्स जब हम नाम लेते हैं, और इसका जिसका एक्सटेंट बहुत ही ज्यादा था. एंड देन वी आल्सो डिस्कस्ड दैट दिस how this civilization came to an end. Different theories have been put forth. We had a discussion on that, and then we see that around 2000 BC, 1800-2000 BC, इसके around हम देखते हैं कि that this civilization is losing its sheen, it is losing its glory, and just decline होता है civilization का. For varied factors, different theories have been proposed for that. लेकिन इसके बाद इस decline, यूरोपियन civilization के decline के बाद हम देखते हैं कि that northern India में, या अगर आप देखेंगे western, eastern parts of this Indian subcontinent, we see certain cultures, certain different cultures emerging. और इन कल्चर्स ना तो ये अर्बन थे, these were not urban cultures, these were not what we can say ये कल्चर्स जो थे ये नॉन अर्बन कल्चर्स थे. and these were not just, they cannot be seen as a continuation of the Harappan culture. So they were non-Harappan cultures थे ये, and then they were also non-urban. इनका कैरेक्टर जो था वो अर्बन कैरेक्टर नहीं था, इनका रूरल कैरेक्टर था. So these are emerging in the rural areas. These are emerging, the predominant occupation of people in these Vedic cultures was, pastoralism and agriculture. They were not that much involved in, non-agrarian activities. वो नहीं थे. So उस हिसाब से ये जो थे ये non-urban cultures थे. And these were not to be seen as a continuation of the Harappan cultures, क्योंकि इनके features Harappan civilization के features जो थे उनसे बहुत ही different
रहे हैं. So इन कल्चर्स की जब हम बात करते हैं which emerged in the post Harappan period, हरप्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद जो हम ये देख रहे हैं ये कल्चर्स, तो इन कल्चर्स पोस्ट हरप्पन कल्चर्स, इनमें एक इन कल्चर्स में हम देखते हैं कि दैट नॉट ओनली द पीपल यूज्ड tools of stone, but they also used copper tools as well. So copper and stone were used, they were used by the people in these very cultures. So in cultures को इस वजह से, because of the use of copper and stone side by side, because of that these cultures have been referred to as Chalcolithic cultures. So copper and stone, both these things, both these materials were used. And then that means in all these cultures we see a use of copper in some cultures it was to a great extent, in certain cultures it was to a very small extent, but we see that copper was used in these very cultures, and stone was also used. So there was use of copper as well as stone, and so we call them as Chalcolithic cultures. Now all these Chalcolithic cultures, जो ये Chalcolithic cultures हैं, ये किसी एक जगह पे नहीं मिले हैं. एंड अगर इनका हम देखेंगे कि इन क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखेंगे, सो दे आर इमर्जिंग एट द एंड ऑफ द सेकंड मिलेनियम के अराउंड ही ये इमर्ज हो रहे हैं. एंड दीज कल्चर्स जिनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दैट कॉपर एंड स्टोन टूल्स वेर यूज्ड. सो इन Chalcolithic कल्चर्स में एक ये चीज रहा है, लेकिन नाउ दे आर बीइंग नेम्ड. ये जो Chalcolithic कल्चर्स की जो हमें साइट्स मिली है जहाँ पे एक्सकैवेशंस हुई है, होड्स थ्रू वहां से कॉपर के टूल्स मिले हैं वगैरह डिफरेंट प्लेसेस में. तो इन कल्चर्स का, इन Chalcolithic कल्चर्स का नाम जो है, इनको ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे इन कल्चर्स को नाम दिया गया है. सो वी हैव अ Chalcolithic कल्चर which is named as Banas culture. Banas the place in Rajasthan. So geographically इनको geography के basis पे where their location, geographical location, on that basis these cultures are named. Same way we have Kayatha is a place, Kayatha culture. We have Malwa culture in Maharashtra. We have same way Jorvi culture again in Maharashtra. So we have different Chalcolithic cultures spread out in different parts of the Indian subcontinent. And these cultures, there are a number of sites related to these cultures, and these cultures are named on the basis of the place of of their location. अब इन कल्चर्स के अगर हम देखेंगे कि इनके सैलेंट फीचर्स क्या थे, प्रिडोमिनेंट फीचर जिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यूनिक फीचर्स जिनके बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, we find that a special feature in these Chalcolithic cultures. तो उनमें एक जिनके बेसिस पे इन कल्चर्स को कभी-कभी नाम दिया जाता है, that is the poetry. These cultures, different cultures use a different type of poetry. Different किस्म की पोट्री ये यूज करते थे. So we have some of the cultures use जिसको हम कहते हैं ऑचरी कलर्ड पोट्री, और जो ये ऑचरी कलर्ड पोट्री यूज करते थे उस कल्चर को हम ऑचरी कलर्ड पोट्री कल्चर भी कहते हैं. So maybe वहां पे इस कल्चर के और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहे होंगे, लेकिन डोमिनेंट एक बहुत ही बड़ी लेवल पे हम देखते हैं पोट्री कल्चर. सो ये एक Chalcolithic कल्चर्स में जहाँ पे एक स्पेशल इस टाइप की पोट्री मिलती थी. दिस इज वन. सिमिलरली वी हैव जिसको हम कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर. सेम वे वी हैव पॉलिश्ड ग्रे वेयर कल्चर. सो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द कल्चर्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पोट्री. जिस टाइप की ये पोट्री यूज करते थे उस पोट्री के बेसिस पे इन कल्चर्स का नाम रखा गया है. So, जब हम ऑचरी कलर्ड पोट्री कल्चर की बात करते हैं तो we have found archaeological evidences about this culture in Uttar Pradesh, and
खास इसके जो इस कल्चर में अगर हम देखते हैं तो इसके खास फीचर्स क्या है कि दैट लगता है कि ये जो कल्चर है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये कल्चर है. सो इसका जो स्पैन था वो शॉर्ट था, एंड देन शॉर्ट ड्यूरेशन सेटलमेंट्स हमें मिले हैं इस कल्चर इससे रिलेटेड. सो what important things we have found of this very culture. Jars मिले हैं, बाउल्स मिले हैं इस कल्चर से रिलेटेड. इसी तरीके से फ्लास्क्स मिली है, बेसन्स है, स्पाउट्स है, बैंगल्स मिली है. सो इस पोट्री से रिलेटेड ऑल दीज थिंग्स वी हैव कम, वी हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स. ये सारी चीजें हमें इस कल्चर से रिलेटेड मिली है. एंड देन आर्कियोबॉटनिकल जिसमें पास्ट रिमेन्स ऑफ प्लांट्स को स्टडी किया जाता है. आर्कियोलॉजी और बॉटनी की एक इंटरडिसिप्लिनरी काइंड ऑफ ये डिसिप्लिन है. इट्स अ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी काइंड ऑफ फील्ड. सो जिसमें पास्ट रिमेन्स ऑफ प्लांट्स को स्टडी किया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट certain interpretations, certain conclusions are drawn. So through those archaeobotanical studies, new things, new remains of this culture have come to light. So different चीजें वहां से about what type of crops were cultivated, what type of plants were domesticated and all that. So this is one among the different cultures, Chalcolithic culture, जिसको हम ऑचरी कलर्ड पोट्री कल्चर कहते हैं, जो यूपी के जो प्रेजेंट यूपी जो है, जो वहाँ पे इसके हमें एविडेंसेस मिली है. शॉर्ट ड्यूरेशन सेटलमेंट कल्चर्स थे ये. जार्स, बाउल्स, फ्लास्क्स वगैरह हमें इस कल्चर से मिली है. देन द अनदर कल्चर जो क्योंकि हम ये सारे कल्चर्स की जब बात करते हैं तो वी से दैट वी नेम देम ऑन द बेसिस ऑफ द पोट्री दैट वाज डोमिनेंट ड्यूरिंग द कल्चर. सो इस टाइम पीरियड में इस जगह पे ऑचरी कलर्ड पोट्री डोमिनेट थी, तभी इस कल्चर का नाम जो है ऑचरी कलर्ड पोट्री कल्चर भी कहा जाता है. सो सेम वे देयर इज अनदर टाइप ऑफ पोट्री व्हिच वाज डोमिनेट एट अ डिफरेंट प्लेस इन राजस्थान, जो ऑचरी कलर्ड पोट्री के बाद ये कल्चर आता है. एंड देन पेंटेड ग्रेवियर कल्चर जो अभी कह रहे थे वो इसके बाद आता है. तो ऑचरी ओसीपी या PGWC शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहेंगे, इनके बीच में एक कल्चर आता है जिसको ब्लैक रेड वियर कल्चर कहा जाता है. और ये कल्चर जो है, दिस ब्लैक रेड वियर कल्चर जो है, इट इज फाउंड इन राजस्थान से हमें ये कल्चर मिला है. सो इस कल्चर की जो पोट्री है, इसका कलर जो है ब्लैक कलर इसके इनसाइड है एंड नियर द रिम. जो रिम है इसकी, और जो इस पोट्री की रिम जो है, और इसका जो इंटीरियर ऑफ द पोट्री है, that is a sort of black color. और इससे ये पता चलता है कि ये लगता है कि that there was some sort of inverted firing. जब इसको बेक किया जाता था, सो इसको उल्टा करके उस मेथड के जरिए शायद इसको फायर किया जाता था. सो दिस इज अबाउट द ब्लैक एंड रेड वियर कल्चर. ये कल्चर जो है, दिस हैज बीन फाउंड एट, ये कल्चर राजस्थान से इस कल्चर की जो साइट्स है वहां पे मिली है. देन वी हैव राजस्थान के बगैर हमें ये मध्य प्रदेश में भी इसके साइट्स मिलती है. वी गेट साइट्स फ्रॉम बिहार एंड वेस्ट बंगाल. और इस कल्चर से अगर कॉटन के जो हम टूल्स देखेंगे तो क्या मिलता है कि कॉपर रिंग्स, कॉम्ब, and then we also get about waste flasks, chips. ये सारी चीजें इस कल्चर से हमें रिलेटेड हमें मिलती है. Then the third Chalcolithic culture, which is जिसका डोमिनेंट फीचर, जिसकी डोमिनेंट पोट्री पेंटेड ग्रेवियर पोट्री थी, उस कल्चर को नाम दिया गया है, that culture is named as painted graveyard culture. So ये कल्चर जो है, ये रोपर राजस्थान, भगवानपुर, हरियाणा, all these places पे हमें पेंटेड ग्रेवियर कल्चर की स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिली है. और पेंटेड ग्रेवियर कल्चर में जो हम देखते हैं कि जो पोट्री, इसमें पेंटेड ग्रेवियर पोट्री जो थी,
it was a wheel made pottery. ये पोट्री व्हील पे ज्यादा बनाई जाती थी. एंड इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिला है कि दैट इसकी स्मूथ, बहुत ही हद तक इसकी जो सरफेस थी दैट वाज अ वेरी स्मूथ सरफेस. एंड इसका कलर जो था दैट वाज ग्रे, or ash gray in color. And then is culture, that means we are discussing archery colored pottery se leke, then a black and red wear pottery, and then in a way it is also ye hame dikhata hai ki that there was some advancement, humans were making certain advancements. Wo as time was passing on, there was some sort of sophisticated getting in. नए नए तरीके, नई नई इन्वेंशंस हुआ करती थी. सो आर्चरी कलर से लेके फिर ब्लैक रेड वेयर, एंड देन वी सी दैट पेंटेड ग्रे वेयर, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर. वो दिस शोज द इवोल्यूशन ऑफ पोट्री के बेसिस पे हम वी आर वी कैन इन अ वे हम कह सकते हैं कि दैट अगर इसको भी कल्चर्स को भी आप देखेंगे तो यू सी दैट there was it followed a trajectory from simple and then getting complex and new features being added. So painted grey wear culture की अगर हम बात करेंगे तो what was in this very culture, क्या हम देखते हैं कि इसकी साइट जो है हरियाणा से मिलती है, भगवानपुर हरियाणा, नूह राजस्थान वहां से मिलते हैं, रूपर पंजाब. सो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिस इज द एरिया जहां से हमें इसकी साइट्स मिली है. और एक चीज की ये पोट्री थी, इट वाज नॉट हैंडमेड, इट वाज व्हील मेड पोट्री, स्मूथ पोट्री थी बाकी पोट्रीज से. इसका कलर जो था ग्रे टू ग्रे ऐश, ये कलर्स थे. और इस कल्चर में रहने वाले लोग जो थे, अगर हम देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर्स कौन सी स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर्स उनके पास अवेलेबल थे, तो वाटल एंड डॉब स्ट्रक्चर्स थे, बर्nt अर्थ मड ब्रिक्स ये यूज हुआ करती थी. इनके टूल्स जो है जो हमें मिले हैं, दे इंक्लूड एक्सिस, चिजल्स, arrowheads. These are the kind of tools that have been found in this painted grey wear culture. And then these people, where these painted grey wear was used on a larger scale, जिसके बेसिस पे इनका नाम ऐसे रखा गया है. So we have found traces through archaeology कि ये जो crops, the crops that they used to cultivate, they included rice, wheat, barley, and the plant and the animals that they domesticated, or which they were जिनके बारे में इनको, जिनकी इल्मियत इनको थी, जिनको वो जानते थे, जो उनके यूज में थे, they include, उनमें हम हॉर्स को देखते हैं, we see cattle, we see pig, goat, deer. So इस कल्चर में हम देखते हैं कि that crops were also known to them. Main crops were rice, wheat, barley, and these crops they were domesticated, they were cultivated. But at the same time we see that these the people of this free culture, they also know about horse, cattle, pig, goat, deer. These were the animals known to them. And the type of tools that they used, chisels, arrowheads, axes, these were kind of thing. And then number of trade practices, हमें पता चलता है कि that these people in this very culture we find traces of the other culture as well. So that shows that this culture had trade connections with other places as well. And this was about the painted grey wear culture. तो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के बाद हम देखते हैं कि we also get there is another culture, that is northern black polished wear. So northern black polished wear is this was the pottery that was name of the pottery, and the culture associated with it, that is named as northern black polished wear culture. So it is like in short form it is NBPW. So northern black polished wear. So इसकी जो this was found at Taxila in 1930s initially, and then it is ये जो है north black polished wear, it succeeded painted grey wear. And इसमें जो हम देखते हैं कि that
the tools which are associated with this very culture, they include, उनमें हम देखते हैं chisels, pins, needles, इस टाइप के tools हमें मिले हैं इस culture से related. और ये जो पोट्री थी, ये वाली पोट्री थी, पेंटेड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो पोट्री है, तो इट वाज ग्लोसी, इट हैड अ ग्लोसी सरफेस. इसकी सरफेस जो है वो ग्लॉसी है. दैट मीन्स वेरी प्लेन. इट इज नॉट कोर्स, इट इज नॉट मैट लाइक ऑर्डिनरी जो पोट्रीज थी. तो इसमें हम देखते हैं कि दैट मीन्स दिस शोज दैट सम एडवांसमेंट वाज अचीव्ड. Then there was some advancement in the making of the pottery, and then so the glossy surface itself reflects that there was pottery making may be certain advancements had been made. Second important चीज है कि different colors की ये pottery थी. So that is also something very much that's also showing some sort of advancement. And third important thing about this pottery is that some of the pottery of this very type, they were as thin as 1.5 millimeter. So itni patli pottery, itni patli jo pottery हमें मिलती है. So this also shows that some sophistication was involved in the making of this very pottery. And then fight walls were there. तो ये फोर्टिफिकेशन वॉल्स की, ब्रिक्स की, और ड्रेनेज सिस्टम हमें इस कल्चर में मिलता है. दिस शोज दैट जब फोर्टिफिकेशन है तो दिस मीन्स दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट. सो some threat was there. They wanted to protect themselves from someone from the outside. That is why they had fortified their habitations, and there were fortified walls. Same way, we also see that we see a sort of drainage system there in this very culture. This also indicates, this also shows, ये भी हमें दिखाता है कि that some hygienic sense had developed. These people had some high sense of hygiene. So इसीलिए drainage system, और इस drainage system जो था, तो that means there must have been some authority to look after these kind of things. So that means कि एक completely egalitarian kind of society नहीं हो सकती थी. So some sort of differentiation had set in, obviously would have been there. So इसमें जो हम देखते हैं कि इसमें कौन से tools इस culture को हमें इस culture के जो tools हमें मिलते हैं इस culture से related, they include chisels, then pins, needles, और जो crops या animals which they knew about, they included rice, wheat, barley, peas. Same way in animals, cattle, sheep, goats, pig, these were animals known to them. They domesticated such kind of animals. So this is about these very cultures, be it orangey colored, painted grey ware, black red ware, and the northern black polished ware cultures जो है. So this is about the Neolithic cultures named on based on the dominant type of pottery that was used. Now we see that इसमें हम एक चीज देखते हैं कि when we move on from the north to the southern side, and then we find that कि नॉर्थ साउथ, जब हम साउथ इंडिया की ओर देखते हैं कि इन कल्चर्स की बात, इन इस टाइम पीरियड की बात, तो we see that unlike what we see in northern India, जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा, या अभी चलकोलिथिक कल्चर्स यहाँ पे देख रहे थे, या इससे पहले हमने और थीम्स जो थी डिस्कस की, तो we found that in case of northern India we see that जो फार्मिंग कम्युनिटीज है या जो एग्रीरियन कम्युनिटीज जो इमर्ज हुई in the northern part of the subcontinent, we see that there is a sort of continuity in that from tribal pastoral to agrarian, and then settler villages, and then to towns, and this. So this is what we are seeing in north. There is a continuity, there is an evolutionary process.
But in case of South, we see that these farming communities are emerging around third millennium, BCE, and uh, they seem to have emerged, very suddenly. There is no gradual emergence of these, communities. It seems that, as if someone came from somewhere, and it all started like that. So जो इन साउदर्न इंडिया, जब हम इन कल्चर्स की बात करते हैं, तो सो वी डू नॉट फाइंड ए कंटिन्यूटी सॉर्ट ऑफ देयर, और हम वहाँ पे जो है कि इस चैल्कोलिथिक कल्चर इज वेरी मच रिलेटेड टू व्हाट इज टर्म्ड एज इन साउदर्न इंडिया। जब हम चैल्कोलिथिक या आयरन, अर्ली आयरन की बात करते हैं कि ये कहाँ पे मिलता है हमें, सो वी गेट इन साउथ वी गेट नियोलिथिक सरफेसेस जो है वहाँ पे हमें मिलती है, पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस मिलती है। इन इवन इन फॉरेस्ट रीजन्स do not get any evidence to prove evolution of village farming communities from hunting gathering, जो economy थी साउथ इंडिया में, we do not find any sort of evidence wherein evidence in the sense कि जहाँ पे hunter gatherers जो है उन then they became वहाँ से evolution होके फिर वो settled agriculture practice करने लगे. We do not, that link is missing in case of South India, and it appears that is as if the evolution, as if the emergence of these farming communities was sudden. Then हम साउथ में हम देखते हैं कि आयरन एज की जो आयरन एज या आयरन की जो आयरन यूज की जो हमें एविडेंस मिलती है, दैट इज अराउंड 1100 BCE, एंड दिस इज बेस्ड ऑन रेडियोकार्बन एनालिसिस. एंड आयरन की बहुत सारी चीजें जो साउथ में हमें मिली है, दे हैड कम फ्रॉम व्हाट इज टर्म्ड एज मेगालिथिक कल्चर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेगालिथिक कल्चर जो है, megalithic cultures का एक ये था कि that it is that culture where we see that which was characterized by big graves. Megalithic, mega means big, lithic means stones, where there were graves and they were covered with big stones. And this we see, this type of culture we see in South India, around at the end of the second millennium and at the beginning of the end of second millennium, beginning of first millennium, इसी के अराउंड हमें देखते हैं. एंड ये मेगालिथिक कल्चर है जिसमें हम देखते हैं कि दैट it is related to the what practices they followed for burying the dead. डेड के साथ कैसे डील करना, how to do with that. So it is related to that. Mortuary practices. So यहाँ पर हम देखते हैं कि that covering graves with big stones. This is a very important feature in this very culture जो वहाँ साउथ में मिला है. लेकिन अब it is archaeologists and historians, they are now arguing that evidences suggest that no single cultural group can claim that this was their characteristic. It was, कहने का मतलब है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि ये एक पर्टिकुलर कल्चर का ही की प्रैक्टिस थी. डिफरेंट कल्चर्स में इस टाइप की प्रैक्टिसेस हुआ करती थी. एंड इनफैक्ट इफ वन लुक्स एट जिसको हम कहते हैं ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड, तो वहाँ पे भी हमें ये मिलती है कि we get evidences of this kind of culture. तो in megalithic cultures में हम देखते हैं कि how the dead were buried and all that. So we see at times that the dead were buried. Burial of the dead जो था, it was in the graves, and they were kept in a relaxed position. At times उनके साथ कुछ चीजें भी रखी जाती थी. At time in some of the graves, what has been found is that the body was cut below the feet of the corpse were cut off, and this was perhaps with this a notion that they did not want the dead to become the ghosts and walk around and haunt them. So ye bhi based on this kind of
जो बिलीफ था उनका कि ऐसा हो सकता है, सो उसकी वजह से वो डेड बॉडीज जो थे उनके पैर काट देते थे, एंड देन दे यूज्ड टू बी बरीड इन ग्रेव्स, एंड दोज ग्रेव्स वर कवर्ड विद बिग स्टोन्स. कभी कभी ग्रेव्स में देखा जाता है कि दैट in the children they were put in the urns, big sort of type of big urns जो है बड़ी पोटरीज उनमें उनमें भरा जाता था, एंड देन दे वर buried and again covered with जिसको हम कहते हैं again covered with big stones. So this was the characteristic feature जो हम देखते हैं कि यहाँ पे साउदर्न इंडिया में, एंड देन वहाँ पे इस कल्चर, इस मेगालिथिक कल्चर में हम देखते हैं कि दैट इन कल्चर्स की भी जो सब्सिस्टेंस थी, जो इकोनॉमी थी, there were some crops that they cultivated, pulses, millet, they were important crops, and they also domesticated animals and all that. So this was about the Chalcolithic cultures का जो part था, it was about that. Then after this, these Chalcolithic cultures, ये इनकी continuation के साथ साथ हम जब देखते हैं कि when we reach around 1500 BC, तो हम देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में हम इस टाइम पीरियड से रिलेटेड अब एक नए we get to know about a new culture, new people with new practices, new beliefs, and that was around 1500 BC, and we see that these people claim to have received some certain कुछ divine revelations इनके पास आई थी, and on the basis of that फिर ये जो एक लिटरेचर डेवलप हुआ जिसको हम जो which throws light on this very period 1500 BC onwards, आगे तक जो हमें बहुत इंफॉर्मेशन देता है इस पीरियड की, and this is this time, this period is termed as ये वैदिक पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है. So 1500 के अराउंड जो पीरियड है that is termed as early Vedic period, and इसके बाद का जो बाद में हम देखेंगे कि then there is also what is termed as a later Vedic period. So जो ये कल्चर्स जब हम अगर हम to connect it with what we were discussing, Harappan civilization के डिक्लाइन के बाद हम देखते हैं कि that number of these cultures are emerging, and these number of cultures had their own the dominant types of poetries, and on the basis of those poetries they have been named as archery colored poetry culture, red and black wear culture, northern black polished wear culture, वगैरह वगैरह. So उसके बाद हम देखते हैं कि that it's believed that some people in Punjab, Sapt Sindhu region जो है वहाँ पे कुछ लोग they inhabited this place, and it's said that they had come from West Asia, Central Asia वगैरह उस साइड से वो आए थे, and then they settled there in this very region, and they were knowledgeable people, and they called themselves as that's why they are known as the Vedic people, Vedic society. So ये 1500 के अराउंड स्टार्ट होता है, and then we get we get a lot of information about this very time, this very era from the literature that's available about it, and उसको हम Vedic literature कहते हैं. It is a very it's a big corpus of literature. It is believed to have been revelation, or you कहते हैं sacerdotal literature है ये, and at times this literature is used as a source to reconstruct past of this very period. लेकिन कभी-कभी इसको सप्लीमेंट करने के लिए जो इस लिटरेचर में जो रेफरेंसेस है इस टाइप की सोसाइटी के बारे में, इस टाइप की इकोनॉमी पॉलिटी के बारे में जो एविडेंसेस है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का भी यूज किया जाता है. सो ये पीरियड स्टार्ट होता है, इसका जो अर्लीस्ट फेज है, दैट फेज इज टर्म्ड एज अर्ली वैदिक पीरियड.
या अर्ली वैदिक पीरियड में एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स जो हमारा, दैट इज द ऋग्वेद। इसलिए इस पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। इट इज फ्रॉम 1500 BCE to around 1000 BCE। सो ये पीरियड था, दिस अर्ली वैदिक पीरियड का, जो जिसको हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। सो द अर्लीस्ट टेक्स्ट जो रिवील, जो कहा गए, which are believed to have been revealed, they belong to this very period। earliest इस पीरियड के बारे में हमें है, and they are known, the text is known as the Rigvedic text। ऋग्वेदा के बगैर और भी कुछ वैदिक टेक्स्ट है, जैसे यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, जिनके बारे में हमने जब डिस्कस द सोर्सेस, सो वी हैड a little bit discussion on that as well। सो वो हमने देखा है वहाँ पे। तो जो अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स हमारे अवेलेबल है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कि इस पार्ट पे, दैट इज दिस ऋग्वेद। सो जिस पीरियड के बारे में ऋग्वेद हमें इंफॉर्मेशन देती है, that period is termed as the Rigvedic age, or it serves as the early Vedic age as well। So what does this Rigved tell us? So it tells us about the people who had lived during these very times, and it is said that the people lived in जिस एक रीजन जिसको सप्त सिंधुआ या सप्त सिंधु के नाम से कहा जाता है। इट्स द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इट इज इन द पंजाब रीजन। वहां पे ये सेटल हुए इस पीरियड में। सो दिस जो वेदास है, इन्हीं पे रिवील की गई थी। इट इज बिलीव्ड दैट इट वाज रिवील्ड अपॉन देम, एंड देन they were not, at that moment they were not written down। they were just memorized and then passed on from one generation to another generation। और उनको एक ही syllable by word by word, in with proper pronunciation and keeping all these things in mind, इसके हिसाब से इसको memorize किया जाता था। and then they moved on from one generation to another generation to another generation, and then when they were compiled in the form of in written form। so ये जो ऋग्वेद जो period है, it tells us about that it was revealed on, this Rigved was revealed on some people who are termed as, उनको Vedic people भी कहा जाता है, लेकिन sometimes they are also reported as the Aryans। अब इस पे this Aryan, ये भी कहा जाता था कि that these people, there were different views कि ये जो सप्त सिंधु में रहने वाले लोग थे, whether they came as invaders or whether they came through the waves of migration from Central Asia and other places। तो ये जगह है सप्त सिंधु, जहाँ पे ये लोग रहे, जो डिफरेंट थे उन लोगों से जिनका नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वियर कल्चर था, जिनका ओचरी कलर कल्चर चाहे, या इंडस वैली पीपल जो थे, जो वो दे वर डिफरेंट फ्रॉम देम। ये डिफरेंट थे इससे कि क्योंकि और ये सप्त सिंधु इस एरिया में, पंजाब के इस एरिया में, दे इनहेबिटेड दैट वेरी प्लेस। नाउ हम इनको these people are also referred as at times as Aryans। और इनके बारे में डिफरेंट व्यूज हैं कि क्या ये लोग जिनको हम आर्यंस कहते हैं, whether they came as whether they migrated to this place, moved on from some place to another place, बारी बारी आ गए different waves में, or whether they came as invaders, invasion था कि, or there was what is termed as migration। so this is a very debatable issue कि आर्यन इन्वेजन जो ये हुआ था कि नहीं था, ये एक मिथ है कि ये एक रियलिटी है। and there for a long there were number of theories for this, and we see that जिसको आप आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं, there is a big Aryan question and there's a debate on this very thing।
destroyer of force. There is a reference about Purandar, that means Indra, or Indra ko destroyer of force kaha jata hai, and it was related to that perhaps that these people were the destroyers of Israeli civilization. But archaeological evidences and other evidences have clearly established that this was not the case. So this is again, this question is there, whether they came as, whether Aryans came as, and what this Aryan was it, there was initially, it was believed to be a race, but then that was questioned. वो क्वेश्चन किया गया. Now it is believed that it was a lingual group, एक ऐसा ग्रुप जो एक खास टाइप की लैंग्वेज स्पीक करते थे, and on the basis of that they shared that. So it was not a superior race, because now biologically it has been proved that the concepts of race, superior and inferior race, they are constructs, they are flawed in principle. So अब ये जो, whether they had migrated, these people, or whether they came as as invaders, this question is largely being settled. This has been settled, and a new इस पे नया research होता है. So keeping that in there, that can be a discussion in some point in future. लेकिन अब ये जो हम ऋग्वेदिक टाइम्स कहते हैं, ऋग्वेदिक सोसाइटी जो है, तो इस सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, तो इस सोसाइटी की इकोनॉमी कैसी थी, इस सोसाइटी की पॉलिटी, इस सोसाइटी की क्या रिलीजियस बिलीफ्स थे इनके, that all becomes, that all gets more important, बहुत ज़्यादा important बनता है. And then we see कि जब हम ऋग्वेदिक सोसाइटी की बात करते हैं या ऋग्वेदिक टाइम्स की बात करते हैं, जिसका मेन सोर्स हमारे पास itself ऋग्वेद है. So about their economy, we get to know that their economy was largely pastoral economy. They were pastoralists. कि जो ऋग्वेदिक people थे, their main source of income, their wealth generation जो होती थी उनकी, जो उनकी दौलत या जो उनकी इकोनॉमी चलती थी, that was based on pastoralism. So animal wealth was the main source of wealth for these very people. Though agriculture was also practiced, but that was secondary in importance to pastoralism. So it was a pastoral kind of economy. और इसमें cattle wealth की बहुत ही importance थी. And in Rigved, if you go and through the Rigved, you will find many references made about gav, that is cow. Cow से related बहुत ज़्यादा evidence, the references की मिल रही है. And then there are words like Gavasti, there are words like Komat, there are different kind of which can be traced to gav से word से ही जो निकले हैं. That means cattle and especially cow was very important to these very people. And animal wealth जो था, animal wealth was very animal wealth was very important. तो हम देखते हैं कि so that early Vedic society जो थी, it was pastoral. Cattle rearing was a dominant occupation, and animal wealth जो थी was more important than agricultural produce. और इसमें हम देखते हैं कि अगर ऋग्वेदा देखेंगे तो ऋग्वेदा की जो hymns है ऋग्वेदा में, they provide an extensive evidence about the importance of cattle. So many linguistic expressions जो मैं भी कह रहा था, गावस्ती, गावसेना, गावयत, ये सारी जो ये terms, ये linguistic expressions हमें ये this indicate that cow was very important to these very people, because the economy was pastoral. Animal wealth was the main animal wealth was the main source of wealth. अब there were इसलिए जब animal wealth was and cow was very important, तो हम देखते हैं कि that protection of cow was also a very important and noble searching for cow, protection of cow, these were very important. These were very important things. So इन cow के बगैर ये जो ऋग्वेदिक people थे, they also knew about, उनको
और cow के बगैर जो है, they also knew about horse was there, and horse was a chariot puller kind of. So these people are also known for the use of chariots and horse. Indus Valley civilization की किसी भी साइट से हमें कोई एविडेंस नहीं मिली है हॉर्स की, बट in Rigvedic times, in this very period, in find evidences that these people knew about horse. So that is also a point. That also shows that these people were different from their people, क्योंकि वहाँ पे किसी भी साइड से हमें horse की evidence नहीं मिली है. It in a way it means that horse had come at a later stage to this very place. And then in इस Rigvedic times में जब हम देखते हैं कि pastoralism was the main base of economy, economic, इसी से what we say wealth, animal wealth थी, तो हम देखते हैं कि that there used to be conflicts about cow pastures and all that. So ये भी हम उसमें देखते हैं कि that this was also there. So this that means कि जब हम इस economy की बात करते हैं, Rigvedic times की जब हम economy की बात करते हैं, तो we find that it was cattle based economy, it was pastoral, animal wealth was very, very important, and then agriculture was the secondary importance. अब जो as compared to जब हम देखते हैं कि the number of references made for cattle rearing ऋग्वेदा जितनी रेफरेंसेस कैटल रियरिंग के हैं, तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम रेफरेंसेस हमें मिलती है अबाउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. सो दिस आल्सो शोज, बिकॉज ऋग्वेदा इज द मेन सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, सो दिस आल्सो टेल्स अस दैट, this also shows that perhaps pastoral activities were more important, dominant than agricultural activities. और जो ऋग्वेदा में भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी जो रेफरेंसेस हैं, दे आर ऑफ द लेटर डेट. अब जब अगर हम इस इकोनॉमी में बात देखेंगे कि हाउ whether there was some sort of tax paying or something like that, तो हम देखते हैं कि that इस सोसाइटी में जो हम देखते हैं कि गिफ्ट एक्सचेंज एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल था इस सोसाइटी में. जो ऋग्वेदिक सोसाइटी में इस सोसाइटी में जिसकी इकोनॉमी पास्टोरल थी, जिसमें जहाँ पे कैटल वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इस सोसाइटी में हम देखते हैं कि गिफ्ट एक्सचेंज एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स में when one tribal chief would get into conflict with another tribal chief, then इसके साथ साथ हम देखते हैं वहां पे कि then emerged the system of tributes, कि tributes and presentations का जो एक custom जैसा डेवलप होता है, जिसमें एक ट्राइबल चीफ या एक ट्राइब दूसरे या अपने ट्राइबल हेड को या दूसरे ट्राइब को कुछ ट्रिब्यूट या कुछ गिफ्ट्स देते हैं. So this came to be known as bali. Bali was kind of tribute that was paid by the tribal chief to the victorious chief. जो जीतने वाला ट्राइबल चीफ था, जो उसको दिया जाता था, that was termed as bali. So it was a tribute. It was a sort of gift or tribute paid to the one who emerged victorious in the conflict. So same way हम दूसरा देखते हैं कि that जो clan head था, जो इसमें जो tribal chief was also being paid what a sort of tax that was जो बूटी मिलती थी सक्सेसफुली, जो जब ट्राइबल जब रेड्स होती थी, तो जो बूटी वहां पे थी इन द फॉर्म ऑफ कैटल एंड ऑल दैट, उसका एक पार्ट इस ट्राइबल चीफ को देना पड़ता था, and that was known as baga. So it was a share of the tribal rates and all that. So this is about tribal economy, जहाँ पे pastoral economy थी. Agricultural activities के बारे में कम references है, वो भी बाद की references है. Plus कि conflict इस economy में जहाँ pastures और cattle की importance है, तो वहाँ पे conflicts भी थे over
cow or protection of cow. There were different people for that. So protection, search for cows, terms like that are there. And then इसमें हम देखते हैं कि when conflict was there, then one was emerging as victorious, and that victorious tribal chief was then claiming जिसको हम कहते हैं बलि, and that means a sort of tribute and all that was paid to him. So अब अपनी ट्राइब में जहाँ इसके बाकी लोग जो है because जब वो भी they are getting booty and all that, a part of that has to be paid to the tribal chief as well, and that was termed as baga. So this was the type of economy that was in place. अब इस इकोनॉमी से ये इकोनॉमिक प्रैक्टिस जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, Bali and Baga, these are two, one is tribute and second is a sort of tax. So these are economic in nature. Same way, जो economic activities थी, agriculture, pastoral, agricultural, this is it. Now seeing the, what type of society this was. इस society में हम देख early, Vedic society जो थी, it was a tribal society. जिसमें social relations, they were based on kinship ties. कि रिश्ते में, this was relations इसी रिश्ते पे बेस्ड थी, खूनी रिश्तों पे. और अभी तक हम देखते हैं कि सोसाइटी वाज नॉट ऋग्वेदिक सोसाइटी और अर्ली वैदिक सोसाइटी, इट वाज नॉट डिवाइडेड इनटू कास्ट्स में ये डिवाइडेड नहीं थी, बट देयर यूज्ड टू बी व्हाट इज टर्म्ड एज राजा, ऐसे भी पुरोहित वगैरह, अभी भी ये उस स्टेज तक नहीं पहुंचे थे. एंड देन दिस सोसाइटी में हम देखते हैं कि दैट इन दिस वेरी सोसाइटी वी सी दैट देयर यूज्ड टू बी द चीफ ऑफ द ट्राइब, जिसको राजा कहा जाता था, गोपति जिसको कहा जाता था. सो एज एट दिस वेरी स्टेज एक ट्राइब जो थी, इट वाज दिस सोसाइटी वाज ट्राइबल इन नेचर एंड सोशल रिलेशंस किनशिप पे बेस्ड थे. अभी टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट अभी ये नहीं था कि अभी ट्राइब को ये कॉन्सेप्ट उतना नहीं था कि दैट दे वुड से दैट द लैंड, दिस मच ऑफ लैंड बिलोंग्स टू दिस ट्राइब. दैट इज डेवलपिंग एट अ लेटर स्टेज. अब इनकी अगर हम ये देखेंगे कि दैट इनकी पॉलिटी जो है, सो क्या ये इगैलिटेरियन थी? नो, दैट कैन नॉट बी. दिस काइंड ऑफ पॉलिटी कैन आल्सो नॉट बी described as egalitarian, because there used to be a group of chiefs, and then used to be the common tribals. So this cannot be as taken as that everyone was equal. That was not there. And then in this society, number of sacrifices were large sacrifices were made. लेकिन at this stage, at this very society, हम देखते हैं जब भी sacrifices, जब भी rituals किए जाते थे, तो उनका मकसद था सारे ट्राइब की बहबूदी, सारे ट्राइब की का वेलफेयर, सारे ट्राइब का अच्छा. इट वाज नॉट दैट सब ट्राइब, सबके लिए ट्राइब्स, सबके लिए सेक्रीफाइस सबके लिए की जाती थी. इट वाज नॉट इंडिविजुअलिस्टिक दैट वे. एंड लेटर ऑन वी सी दैट sacrifices are becoming extremely hierarchical, individualistic. ये सारे ट्राइब के लिए नहीं, बल्कि और बहुत ही रिचुअलिस्टिक और बहुत ही कॉमर्सम प्रोसेस के थ्रू आप रिचुअल्स बहुत ही कॉमर्सम बनती है, जिसकी वजह से सारे लोग जो है, not all people in the tribe were able to practice those rituals or made those sacrifices. तो अब अगर इनके रिलीजन, इस ट्राइबल ऋग्वेदिक सोसाइटी के रिलीजन की बात करेंगे, so mostly they believed, इनके जो religious beliefs थे, they believed in they considered natural forces as they worshipped them, they treated them as gods. So we have जो ऋग्वेदा में hymns है, उनसे पता चलता है कि that these people venerated natural forces like wind, water, rain, thunder, fire. इनको ये venerate करते, they pay tremendous respect to all these. This is also perhaps for the reason that these people they were in no position to control all these natural forces. So they ये चीजें, ये natural forces उनको invincible ऐसी लगी कि जिनको कोई defeat नहीं कर सकता था. So that is the reason that they considered them as gods, or they venerated these forces. So इस पीरियड में very few female
deities were venerated. So it was a sort of, just अगर आप देखोगे कि it was a patriarchal kind of society, and there was what is primitive animism की animal gods की उस type की हम ये इसमें यहाँ पे evidences देखते हैं. अब अगर गॉड्स की बात करेंगे तो इनके इस ऋग्वेद में जिस गॉड की बात की जाती है तो प्रोमिनेंट जो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंसेस दैट वी गेट फ्रॉम द ऋग्वेदा, तो हमें वहाँ पे इंद्रा के बारे में, इंद्रा गॉड के बारे में, इंद्रा वाज considered as the god of strength, destroyer of enemies, and ये इसकी evidences हमें इंद्रा की ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा मिलती हैं. That shows that perhaps Indra was the most popular god, or god which was considered as very strong. और इसको that was it was this god was venerated as an ideal hero, war hero के तौर पे, जो सोचा जाता था कि that it will strike down the demons, it will destroy the enemies, and it will destroy the enemy settlements and all that. So Indra was considered as a very important god. दूसरा जो है religion से रिलेटेड दूसरे god की जो importance हमें देखते हैं, that was Agni. So next to Indra, this was an important god, जिसको god of fire भी कहा जाता है. Some there are hymns in Rig Veda dedicated to Agni. And then next to Agni, we also see some minor gods, some other gods also, like Surya. Other gods may, Surya, that is sun, Savitri, a solar deity, ये भी एक god, which is very जिसके बारे में popular Gayatri mantra जो है is dedicated to that. Rudra is also a god. So we have other gods, mentioned this society में. Indra, Agni के बगैर भी Surya, Soma, Savitri, these were also the kind of gods during the early Vedic period. And then इस Vedic religion जो था, it was sacrificial, जहाँ पे sacrifices की जाती थी, sacrifices या और performative kind of religion it was. Sacrifices were performed. Sacrifices perform की जाती to invoke the gods को खुश करने के लिए, या कभी-कभी sacrifices दी जाती थी so that one gets victory in battles, ताकि the search for cow is fruitful, ताकि आप sacrifices की जाती थी ताकि cow मिले. And then it was also sacrifices also were made to get a son, to a male child के लिए भी sacrifices की जाती थी. This again shows that this was a sort of a patriarchal kind of society, but this has an economic, maybe there is an economic rationale as well. So that these people believed that because ये जो economy और society का nature ऐसा था जहाँ पे हम देखते हैं कि that cattle wealth, cattle rearing and cattle capture and search for cattle was very important. So perhaps it was believed that the males can do this job in a better way than a female. So maybe that could have been the reason that sacrifices were made to get a son. But again, that would be very patriarchal. So this is about the Rig Vedic period, Rig Vedic times के बारे में, society, economy, polity. These are the details. This is some information about it. But this all information about this society we get from the first literary source on ancient Indian history, that is the Rig Veda. And at times, archaeological sources supplement this information. But one thing is to be kept in mind that this society was not an unchanging society. It was not a static society. Things used to change, and Rigvedic की जो Rigvedas है, so they also pass it on as memorized traditions from one generation to another, and finally they were compiled. So that thing is to be also kept in mind while we discuss the Rigvedic period. So with this, our
today's session is over. I'm concluding it. I'm just stopping here. I hope you would have enjoyed it all through. And in our next session, we'll be talking about the later Vedic period and other aspects of ancient Indian history. Thank you very much and wish you all the best. Thank you.